Thanks. Dipshika, you can please start now. So, wait 1 minute. Good morning, everyone. My name is Deepshika. I'm a postgraduate from botany from Ferguson College, Pune, and I'm here to welcome. I'm here to host you for the seminar, and also to welcome Dr. Swaranjit Singh, a distinguished figure in the field of environmental biotechnology. Dr. Swaranjit Singh is currently the president of MBSI, Chandigarh, Nagaland, Ladakh, Manipur, and Arunachal Pradesh, as well as director of SAS Free Polyclinic Perch, Mohali in Punjab, and also a former head of environmental biotechnology and microbial biochemistry at CSIR. He is being listed among top 2% of global scientists for 4 consecutive years. He has been awarded with fellow National Environmental Science Award, Loyola Environmental Award, and 2 Lifetime Achievement Awards by St. Xavier's Ranchi and Shulmi University Solan. His dedication to this field is further evidenced by his multiple membership in international committees, including WFCC, which is World Federation of Cultural Collection. Dr. Swaranjit Singh's prolific publication in high impact factor journals and his remarkable citation records underscore his profound influence on the scientific community. And lastly, I would also like to tell you that his schooling and graduation is done from Kohima Science College in Nagaland and have a proficiency in the local language of Nagaland known as Nagamese. So please join me in welcoming Dr. Swaranjit Singh to our seminar. Thank you very much, dear Dipshika. You have done a good job, a very good introduction. And I'm really happy that you're here with us today. While I'm talking, Yes, sir. you can also admit the people. Okay? Okay, sir. Yes. So the topic, you can start now, the PPT. Fine. I'm sharing the slide. Please. Just 1 second. Sure, no problem. I see Virdi Saab and I see co-chair, GS co-chair. I'm so happy. I'll be speaking on Nagamese today, which is a Naga language. Sir, you can speak that language? Sir, I can speak very fluently. Oh, I see. But how come you stayed there for a long time? Yes, I did my BSc from Kohima Science College and my I schooling see. also from Kohima. I see. That's why. Great. Is my Yeah. screen visible? No, not yet. You can share it. First, you open in your desktop, then you share it. कुछ तो खाना है भाई मेरे को भी कुछ खाने ना भाई क्या मिलता है हैं? Yes, it is loading now. Okay. Very good.
Yes. You go to the first one. Yes. Please. Very nice. Okay. The topic of my talk today is microplastics, a threat. I'll be speaking today in a regional language which is very common in Nagaland. It is known as Nagamis. Moi aji Nagamis te kotha kobote apni gan huni thakibi. Microplastics ki ase? Next slide, please. Dipshika, next slide. Yes. Microplastics ki ase? Microplastics, synthetic fiber ase, paint dust ase, tire dust ase, fishing equipment ase, aru microbeads also constitute microplastics. Next slide. The size of carry bags currently is having a thickness of 120 microns, effective from 1st January 23, according to Government of India Amendment Rule 2021. So the micro bags which are permitted are having a thickness of only 120 micron. What is the size? Microplastic laga size ki ase? Microplastics bisi huru ase, taikhan laga diameter less than 5 millimeter ase. Less than 5 millimeter microplastic ase. Next slide, please. Itu classification ase plastic litter laga. Paila wala microplastic ase. Aru itu less than 5 millimeter hoy. Second wala macroplastic ase. Itu less than 2.5 centimeter thake. Aru mizo more than 2.5 centimeter. Aru mega 1 meter thake the. Next slide, please. Microplastic kineka environment the ahe. Indoors aru outdoors. Indoors, personal care products like cream, cosmetics, lipsticks, lotions para ahe. Aru kapur para bhi ahe, clothing. Aru moi khan washing machine te kapur to wash kare. Itu para bhi microplastic beads release hoye. Aru purana furniture, old furniture para bhi microplastic beads indoors te ahe. Outdoors te itu truck, bisi dangur truck ase, lamba truck. Some trucks have 50 to 110 tires, wheels. Jitia taikan road te jaye, friction hoye, bisi friction hoye. Road te ekdam 90 km per hour, 100 km per hour, Australia te, America te, India te jaye. So bisi microplastic generate hoye, microplastic fibers. So itu environment te ahi jaye outdoors. Aru emission hoye textile industry para. Textile industry, polyester, terylene, synthetic fibers banaye. Aru city dust. Chandigarh iman bia nai. Keli mane yate bisi industries nai. Hole bhi nearby Chandigarh Baddi ase. Baddi. Tate bisi industry ase, city dust ase. Delhi te bisi city dust ase. Calcutta te, Bombay te, bisi city dust ase. Itu city dust para microplastic fiber niche ahi jaye. Aru jitiya barkhu nae, jitiya rain ahe, to atmospheric fallout hoye. Aru rain water lagot microplastic fiber land upar ahi jaye. Next one, please.
इटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स आसे पहला वाला फ्रैगमेंट आसे दूसरा वाला पैलेट आसे थर्ड वन फिल्म आसे फोम आसे और लास्ट वाला माइक्रोप्लास्टिक फाइबर आसे नेक्स्ट प्लीज इतिया মই খান চাব হিউম্যান এক্সপোজার টু মাইক্রোপ্লাস্টিক মই খান লাগা বডিতে কেনেকা মাইক্রোপ্লাস্টিক যায় पहला वाला आसे ओरल इनटेक মই খান ड्रिंकिंग वाटर ते माइक्रोप्लास्टिक खाए और बॉटल्ड वाटर मिनरल वाटर बॉटल इटू खान तो बेसी बेया आसे दे बेसी माइक्रोप्लास्टिक आसे और सी फूड फिश ऑक्टोपस प्रॉन श्रिम्प्स মই খান बेसी खाए सी ते ओशन ते बेसी माइक्रोप्लास्टिक आसे फिश खान माइक्रोप्लास्टिक खाए और মই खान फिश के खाए श्रिम्प खाए प्रॉन खाए ऑक्टोपस खाए इटू परा মই खान लगा बॉडी ते बेसी माइक्रोप्लास्टिक आही जाए और फूड कंटेनर्स प्लास्टिक लगा ब्रेड बॉक्स स्नैक बॉक्स মই खान बेसी स्नैक्स रखे ना जो सब प्लास्टिक लगा से तो इटू प्लास्टिक परा माइक्रोप्लास्टिक लीच आउट हुई कि नहीं মই खान लगा बॉडी जाए মই खान लगा टमी ते जाए और बच्चा खान इन्फेंट छोटू छोटू बच्चा हुरु हुरु बच्चा ताए खान लगा फीडिंग बॉटल मिल्क लगा टीट्स ते बेसी प्लास्टिक आसे तो মই खान लगा बच्चा के माइक्रोप्लास्टिक फ्रॉम यंग एज 1 month 2 month 3 months परा माइक्रोप्लास्टिक टीट्स परा पाए और नेक्स्ट वन इज इनहेलेशन एयर ते बेसी बेसी पार्टिकल्स आसे माइक्रोप्लास्टिक लगा इटू फाइबर्स माइक्रोप्लास्टिक फाइबर्स आसे इटू लगा साइज तो 10 to 8,000 माइक्रोन आसे स्किन पारा माइक्रोप्लास्टिक भीतर ना जाए होइले भी इटू इंक्रीज एक्सपोजर हो जाए सपोजिंग মই খান लगा किबा काट आसे ना काट होइले इटू माइक्रोप्लास्टिक ब्लड ते पेनिट्रेट करिबो और মই খান लगा बॉडी ते जाबो मानु खान ब्लड से भी माइक्रोप्लास्टिक पाइसे और लंग्स से भी पाइसे हाँ और टेस्टिकल्स रिसेंटली रिपोर्ट आई से ह्यूमन टेस्टिकल्स से भी माइक्रोप्लास्टिक आसे हेल्थ कारणे बेसी बेसी बेया आसे ते और पर्सनल प्रोडक्ट्स लाइक लिपस्टिक देन क्रीम्स लोशंस शैम्पूज इट सोप ते माइक्रोप्लास्टिक आसे और মই খান लगा मोबाइल केस ते प्लास्टिक आसे इटू पारा মই খান लगा फिंगर्स ते एवरी डे माइक्रोप्लास्टिक एकोमुलेट हुए और सपोजिंग याते किबा काट आहिले इटू माइक्रोप्लास्टिक तो भीतर जाओ माइक्रोप्लास्टिक लगा साइज आसे 1 micron to 5 millimeter so 1 micron 2 micron 3 micron can penetrate the skin so it is very risky even our mobile phones are very bad next slide please now microplastic laga toxic poisonous effect kiya itu moi khan lagা body te oxidative stress kore DNA damage kore metabolic disorder generate kore immune response beya kore neurotoxicity itu microplastic iman beya ase moi khan laga nerves ke affect kore moi khan laga nerves te jai attach kori loy और the function of the nerves impair ho jay और itu reproductive and developmental toxicity भी करे माँ लगा पेट से बचा हुए इटू reproductive and development toxicity भी करे इटू करने माइक्रोप्लास्टिक बेसी बेया से মই খান চেক কৰিব লাগে দে माइक्रोप्लास्टिक के नेक्स्ट प्लीज माइक्रोप्लास्टिक करने
আজিকালি একটা নিউ ফুড চেইন আহিছে এটো বেছি বেয়া ফুড চেইন আছে impact of microplastic in food chain microplastic can be transferred एकटा एनिमल para दूसरा एनिमल थे फिश para man ना और birds भी fish खाए birds ते भी जाए chicken ते भी जाए और animals like goat pig cow ताई खाते भी microplastic हो जाए किली माने plants also accumulate microplastic to the range of 1 micron to 5 millimeter plants ते भी microplastic আছে तो microplastic accumulate करे मुखान लगा animal fat थे और tissue थे तो मुझे लगा body थे पाए accumulate करे और concentration rises with time next please microplastic किन्ने का environment थे आहे heat and UV light और mechanical degradation sea ते ocean ते BC microplastic আছে ocean ते BC waves आहे agitation আছে agitation और sunshine भी আছে UV lights fall on the sea तो की होए microplastic form हो जाए और इटू aquatic environment ते जाए पानी ते जाए sea water river water lake water सब ते microplastic जाए ocean ते maximum আছে और इटू birds can खाए animals can खाए और plants also accumulate microplastic next one इटू diagram दिखाए microplastic environment से किन्ने का है plastic waste on the top left beauty care items इटू land से आहे पानी से आहे soil से आहे और इटू plants grow करे ताई खान भी microplastic और nanoplastic एक तर nanoplastic भी आसे 10 to the power minus 9 हाँ तो nano is smaller than micro is bigger than nano nanoplastic and microplastic go inside the plants we eat the food material lot of carrots and radish and tomatoes but most of them are having microplastic और animals they can be खाए grains खाए wheat rice तो animal से भी microplastic है pork beef chicken venison सब लगा मीट से microplastic আছে और seafood third top fish and seafood fish prawn shrimps octopus we can see खाए especially in coastal area और इटू fish we can लगा टेबल पे आए और plastic packaging bottles plastic packaging food all is done in plastic तो we can तो टेबल पे भोई किने ingest करे microplastic और इटू we can लगा tissue ते accumulate करे तो health problem इसी हो जाए प्लास्टिक परा नैनो प्लास्टिक और माइक्रोप्लास्टिक परा लिवर टॉक्सिसिटी हो जाए डाइजेस्टिव टॉक्सिसिटी हो जाए रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी हो जाए इम्यून प्रॉब्लम आहे और कैंसर भी हो जाए इत्यावा इटू इसी ब्या केमिकल्स आसे तो प्लास्टिक से जो लीच आउट करे और दे कैन ट्रिगर कैंसर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज we can itu diagram sabo we can already discuss korise potential effect of microplastics on human health first one is reproductive toxicity it affects our reproduction of the animals and humans also oxidative stress disruption of immune function and carcinogens aru neurotoxicity मुखान लगा किबा की कोई ठीक है मुखान लगा नर्व्स के इफेक्ट करे नर्व स्वेलिंग होए नर्व
neuropathic pain hoye because of microplastic. Diabetes the hoye holi bhi itu microplastic also cause neuro pain. Aru mukhala digestion bhi bya hoy jaye. Then there is lot of microplastic and nanoplastic in our lungs, especially in big cities like Delhi, Calcutta, and Bombay. I read somewhere that the lungs are black of people living in Delhi for years, whereas people living in small towns on a hill, their lungs are quite red. So respiratory problem hai, asthma ho jaye, breathing problem ho jaye because of microplastic. Next one. মই কারণ মাইক্রোপ্লাস্টিকে কেনেকা রিমুভ কৰিব পাৰে, কেনেকা ডিগ্রেড কৰিব পাৰে, কেনেকা রিমুভ কৰিব পাৰে, এটো 4 ডায়াগ্রামস আছে. পহলাওয়ালা কোকুলেশন আছে আৰু ফ্লকুলেশন আছে. এটোতে কি করে পানিতে রিজেন্ট হালে রিজেন্ট হালি কেনে লাইক অ্যালম না হলে ফেরিক ক্লোরাইড হালি কেনে এটুকে মিক্স করে স্টিয়ার করে और जिमान माइक्रोप्लास्टिक आसे सेटलिंग हो जाए, सेटल डाउन हो जाए. नंबर 2 आसे मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी. इटू फिल्टर आसे टू बेसी माइक्रो साइज लगेगा, माइक्रोन फिल्टर आसे मेम्ब्रेन फिल्टर जो लगा साइज 0.5 माइक्रोन ना हले 0.1 माइक्रोन থাকে. इटू पानी तो हाले एफ्लुएंट तो की होए मेम्ब्रेन तो पानी फिल्टर করে দেয় ना पानीते माइक्रोप्लास्टिक नाई होले भी फिल्टर लगा ऊपरते माइक्रोप्लास्टिक आसे. थर्ड वन इज एडवांस्ड फोटो ऑक्सीडेशन. याते सनलाइट आए और कैटलिस्ट हालिबो लागे अगेन एलम एंड फेरिक क्लोराइड और इटू फोटो ऑक्सीडेशन हो जाए बिकॉज ऑफ लाइट, सनलाइट एंड कैटलिस्ट. तो CO2 वाटर और मीथेन रिलीज हो जाए तो माइक्रोप्लास्टिक इज रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम. और लास्ट वन इज बायोरेमिडिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट. इटू माइक्रोब्स आसे, बैक्टीरिया आसे, फंजाई आसे, इटू मिक्स करे कंसोर्शियम आसे trillions of bacteria of different types, trillions of bacteria or fungi of different types are added into the system. They degrade microplastic and then it is converted into CO2, water, or methane. Next slide, please. Ito to ocean laga microplastic pollution chain ase. Microplastic ocean te jaye. As I told you, bisi rock and roll hoy to na. Pani to bisi agitation hoy, waves aye, mechanical friction is there. और की होए माइक्रोप्लास्टिक फॉर्म हो जाए और इटू माइक्रोप्लास्टिक फिश खाई लोए, वेल खाई लोए, शार्क खाई लोए. हाँ, और इटू पीछे मुखान ह्यूमंस खाए और मुखान माइक्रोप्लास्टिक एकोमोडेट करे. नेक्स्ट प्लीज. माइक्रोप्लास्टिक केनेका रिमूव करिबो पारे सिस्टम पर. बायोफिल्म आसे माइक्रोब ना बैक्टीरिया, स्पेशली बैक्टीरिया पानी ऊपरते एक बायोफिल्म बनाई थी. इट इज अ कलेक्शन ऑफ trillions and thousands of bacteria, biofilm, and a secretion is there by bacteria. और इटू खान तो प्रोटीन आसे, ग्लाइकोप्रोटीन आसे, ग्लाइकोलिपिड आसे. इटू बायोफिल्म खान अटैच करे प्लांट्स के और सेडिमेंट्स के. और इटू बायोफिल्म किने का रिमूव करे बैक्टीरिया, किने का रिमूव करे माइक्रोप्लास्टिक. बैक्टीरिया खान माइक्रोप्लास्टिक के अटैच करे किने सरफेस प्रॉपर्टी चेंज करी दी. इटू पीछे ते बायोफिल्म मैच्योर हो जाए आफ्टर से 1 month or 2 months or 3 months. बायोफिल्म मैच्योर हो जाए. इटू पीछे ते माइक्रोप्लास्टिक
ডিগ্রেড হয়ে যায় হলে বি একটা বেশি ইম্পর্টেন্ট কথা আছে 100% প্লাস্টিক ডিগ্রেড করিব না পারে আজি তো 100% প্লাস্টিক ডিগ্রেড हुआ নাই 20% 15% 25% ডিগ্রেড হয়ে যায় হলে বি 75% ডিগ্রেড না হয় মুইখানলা কান্ট্রিতে তিনটা হটস্পট অফ বায়োডাইভার্সিটি আছে একটা তো নর্থ ইস্টে আছে নাগাল্যান্ড মণিপুর আসাম মেঘালয় অরুণাচল প্রদেশ এন্ড ত্রিপুরা এটু হটস্পটে বেশি মাইক্রোবস আছে আনট্যাপড তো মই খান স্টুডেন্টস স্পেশালি স্টুডেন্টস খান এটু আনট্যাপড বায়োডাইভার্সিটিকে আইসোলেট কৰিব লাগে আইসোলেট কৰি কিনে ট্রাই কৰিবলৈ প্লাষ্টিককে ডিগ্রেড কৰিবলৈ আৰু কোন भी प्लास्टिक के 100% डिग्रेड करिले তাইকে তো নোবেল প্রাইজ পাবো নোবেল প্রাইজ পাবো 95% और 100% ডিগ্রেড করিলে নোবেল প্রাইজ পাবো এটু কারণে young students should also work side by side on degradation of plastic 100% এটু বেশি ইম্পর্টেন্ট আছে আপনি সাইড বাই সাইড রিসার্চ করিবি main research may be production of ethanol, production of hormone. Side by side, consortium isolate kori. Consortium isolate kori kene plastic 1 centimeter by 1 centimeter hali. Aru forget it for 1 month, 2 months, forget. Aru after 2 months sabi kiman percent plastic degrade hoise. 50% degrade hole bhi bisi bhalo ase. अपनी लगा ভাল পেপার হবো ভাল পেটেন্ট হবো ঠিক আছে না তো এই কারণে আপনি সাইড বাই সাইড প্লিজ ট্রাই টু ডিগ্রেড প্লাস্টিক নেক্সট ওয়ান এটু মাইক্রোবিয়াল ডিগ্রেডেশন অফ মাইক্রোপ্লাস্টিক আছে মাইক্রোবস টু টাইপস লাগা আছে দে টু টাইপস একটা আছে অ্যারোবিক মাইক্রোব দেখানকে তো অক্সিজেন বেশি লাগে গ্রো করি বলে একটা আছে অ্যানারোবিক মাইক্রোব দেখানকে অক্সিজেন না লাগে দেখান উইদাউট অক্সিজেন গ্রো করিব পারে আৰু একটা আছে মাইক্রো এরোফিলিক দেখানকে অলপ অক্সিজেন লাগে অলপ বেশি না লাগে অলপ লাগে এটু কান মাইক্রো এরোফাইলস আছে এক্সাম্পল অফ মাইক্রো এরোফাইল ইজ ক্যাম্পাইলোব্যাক্টার ক্যাম্পাইলোব্যাক্টার একটা বেশি ভাল গ্রুপ আছে ব্যাকটেরিয়া লাগা দেখান সব लो ऑक्सीजन ते ग्रो करे तो মই খান हॉटस्पॉट para नागालैंड स्पेशली असम मणिपुर para सॉइल आनी केने आइसोलेट एरोबिक बैक्टीरिया आइसोलेट एनारोबिक बैक्टीरिया और माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया तो अपनी खान के बेसि ভাল ভাল स्ट्रेन पाबो हॉटस्पॉट वेस्टर्न घाट री আছে लाइक कर्नाटका महाराष्ट्र केरला गोवा इटु खान इटु भी हॉटस्पॉट আছে তাতে ওরা भी সয়েল আনিব পারে আৰু একটা আছে আন্দামান নিকোবর আইল্যান্ড full of untapped islands of microdiversity not only micro but also biological diversity তো ইটু কি হয় ইটু মাইক্রোবস খান এনজাইমস বানায় extracellular enzymes and intracellular enzymes ইটু খান ইন্টারঅ্যাক্ট করে মাইক্রোপ্লাস্টিক উপর আৰু তাই খান ওয়াটার কার্বন ডাইঅক্সাইড আর মিথেন জেনারেট করে আর মাইক্রোপ্লাস্টিক ডিগ্রেড হয়ে যায় নেক্সট ওয়ান মাইক্রোবস আর তাই খান লাগা এনজাইমস depolymerize plastics no there are big polymers plastics are big long polymers so itu microbes
enzymes बनाए और they act on the microplastic on the polymer and they depolymerize the plastic. Itu enzymes agar नाम आसे lipase, cutinase, esterase, और hydrolase, oxygenase, styrene oxide isomerase. For example, और बिसी बैक्टीरिया खान और फंजाई खान इटू एंजाइम्स बनाए थे इटू कैंडिडा से इटू यीस्ट से कैंडिडा और कैंडिडा सीडोमोनास एस्परजिलस और बिसी बैक्टीरिया से लाइक कॉर्नी बैक्टीरियम aspergillus fusarium aspergillus bacillus vibrio and so on. So it can depolymerize kore aru microplastics are degraded. Next one, it will be same as microbes and their enzymes in presence of sunlight, UV light, they degrade microplasmids. Yate bhi enzyme ase, thik ase, enzyme ase, so they mineralize bioplastic. Next, please. आजिकली तो बिसी टेक्निक आइसे हो molecular technologies, genetic engineering in the degradation of plastic waste. तो आजिकली concept आइसे of microbiome. Microbiome is a collection of trillions of microbes. It may be bacteria, it may be fungi. They together form microbiome. तो metagenomic लाइब्रेरी आजिकली बनाए तो इटू खान के आइडेंटिफाई भी करे और बिसी न्यू स्पीशीज पाए भाल भाल न्यू स्पीशीज पाए ऑफ बैक्टीरिया और डिस्कवरी ऑफ नोवेल जीन्स एंड मेटाबॉलिक पाथवेज हो जाए एक ना प्लाज्मिड थाके बैक्टीरिया पे प्लाज्मिड आसे बैसिलस थे बिसी प्लाज्मिड थाके तो प्लाज्मिड तो स्पेशल फंक्शन कैरी आउट करे इटू हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स के डिग्रेड करे लाइक प्लास्टिक PAH polyaromatic hydrocarbon oil sludge which is very toxic to plasmid is very important in the bacterium to degrade the hydrophobic compounds which do not have oxygen. They have carbon hydrogen chain, but they do not have oxygen. But these bugs can eat oil sludge, they can eat PAH like we eat sugar. They're so great, they are so smart. One-celled microbe, one-celled bacteria is so smart that it can degrade toxic compounds like crude oil sludge and plastic and also PAH and dyes, textile dyes and all that. So we should look for these in the hotspots of biodiversity, especially in the Northeast. I'm dedicating this lecture to Nagaland because I was brought up in Nagaland. So I urge all the people from Nagaland to tap their biodiversity and microbial diversity. So let's go to the next slide. Itu coagulation ase de moi pehla bhi koise secondary wastewater effluent ase microplastic ase moi khan coagulant like alum aru ferric chloride hali wo pare hali kene moi khan flocculation ho jaye coagulation ho jaye aru settling ho jaye aru microplastic ke remove koribo pare. Next one please. It was the microplastic remediation from ecosystem. Ecosystem right side the nanoplastic bhi ase, microplastic bhi ase, algae ase, seaweeds ase, bacteria, fungi, so ase. So it you can to interact kore in the ecosystem, so interact kore. Aru plants bhi ase, trees ase. So together they treat the microplastic and convert it to CO2
water, and methane. This is very, very interesting model of the ecosystem and remediation of microplastic. Next one. Next, please. Now coming to a very important point. In Chandigarh, we have the largest floating solar energy plant in Chandigarh. It's a place known as Nas, and there is a new lake of Chandigarh. The original lake is Sukhna Lake, which is in Sector 2. But now they have developed a lake in Dhanas village, and it produces a lot of electricity. And the cost of this plant is rupees 33.4 million, including 10 years of operation and maintenance for the plant, and also for the fountains which are in the lake. So I used to go there many times with my mother and go around the lake, and I used to see the solar plant which is floating. It is the biggest one in North India. But something went to my mind. These solar panels are made of plastic. So what happens with time, with rain coming and some water touching the plastic, it forms microplastic. It is good thing. Bisi bhala se energy, electricity bune, electricity bunaye, holi bhi at the same time, biya bhi ase. Kele mane microplastic generate hoye aru pani te jaye. Aru itu pani may seep to the groundwater, because the micron size is very small of microplastic and nanoplastic. So itu solar panel para leach hui kene microplastic, nanoplastic groundwater te jabo pare. So moi khan ke bisi alert ho lage. We have to be very, very alert not to leach out plastic to our soil and to the groundwater. Next, please. I found this slide very, very interesting, so I'm sharing with you. Australia te ekta giant Australian road train ase te. It will rubber tire ase, rubber laga tire ase. 110 tires ase te, 110. Aru itu train laga, road train laga, speed ase 100 miles an hour or 100 kilometers per hour, for example. Friction, bisi friction hoy to na, jite road te jabo, bisi friction hoy. Friction logote microplastic generate hoy. So if there are 100 trucks like this with 110 tires and more, how much microplastic can be generated in Australia, Europe, and America? Lots and lots. Of course, they are very good. They can transport a lot of equipment, lot of medical supplies, and also oil, like Shell. They can, like a train, they can supply lubricants and oil. But only thing is, they generate lots and lots of microplastic. I think you like this because it is very interesting example how microplastics are generated. Next one. Now, I want to tell you some ways we can microplastic ke kene ka avoid koribo lage. Ho jaye every day. Pehla wala se drink filtered tap water. Moi khan to na pani boil kori kine khailo, filter na kore. We should drink filtered tap water, not straight away, not after boiling. We should filter it so that the amount of microplastic is less, low. Some will still come, but if you filter the water, thoda kam ho jayega. Then, moi khan to avoid koribo lage single-use plastic, like water bottle, single-use cups. To avoid koribo lage completely. Moi khan laga
ফুড তো মেটালতে আৰু গ্লাছ কণ্টেইনাৰতে ষ্ট'ৰ কৰিব লাগে মই লাগা ঘৰতে না গ্লাছ আছে জাগ ব্ৰাছ লাগা আছে আৰু ষ্টিল লাগা আছে মই খান প্লাষ্টিক জাগ ইউজ নকৰি ঠিক তো আপনি খান भी প্লাষ্টিক জাগ ইউজ না করিবি প্লাষ্টিক বটল ইউজ না করিবি খালি স্টিল লাগা ব্রাশ লাগা করিবি গ্লাস লাগা भी ঠিক আছে ব্রাশ লাগা भी ঠিক আছে হ্যাঁ আৰু মই খান কেতিয়া भी মাইক্রোওয়েভতে প্লাষ্টিকে গরম কৰিব নালাগে মাইক্রোওয়েভতে কেতিয়া भी প্লাষ্টিক নাহালি কন্টেইনার ওকে আপনি খান চাইনা লাগা প্লেট গ্লাস লাগা প্লেট বৰছিল হ্যাঁ টার্সন itu আপনি খান হালিব লাগে মাইক্রোওয়েভতে কেতিয়া भी প্লাষ্টিক নাহালি কেলে মানে আপনি মাইক্রোওয়েভ কৰিলে itu टॉक्सिक केमिकल्स लीच आउट होबो और अपनी खाइब केতিয়া भी प्लास्टिक माइक्रोवेव ना करिबि आरो ऑर्गेनिक कापोर बाय करिब लागे मार्केट पर ऑर्गेनिक वाला आरो अपनी लगा घरते फर्नीचर टेस्टिंग करिबि वैक्यूम करिबि केले माने ओल्ड फर्नीचर ते बेसी माइक्रोप्लास्टिक আছে तो अपनी खान ভাল কৰি কিনে সাফা কৰিব লাগে টেষ্ট কৰিব লাগে আৰু ভ্যাকুয়াম কৰিব লাগে লাস্ট वाला আছে ন্যাচারাল ফাইবারস ইউজ কৰিবি খাদি লাগা কটন লাগা এটো আপনি ইউজ কৰিবি সিনথেটিক ফাইবারস লাইক পলিয়েস্টার টেরিলিন ইউজ না কৰিবি কটন ভাল আছে আৰু এটো নাইলন भी ভাল নাই খাদি ঠিক আছে নেক্সট স্লাইড প্লিজ So these are very good quotations which I got for you. Microplastics, an emerging threat to food security and human health. Plastic in itself is not the problem. It's ending up as litter in nature is the problem. Thank you and take care. I can see Mr. Muni. Mr. Muni. Adipshika, very Yes, well sir. done. You have very well done. Very nicely you have projected the PPTs. Okay, sir. I see Mr. Muni. Muni Saab. Mr. Muni. I think he is not there. So Dipshika, have you some question, any question on this? Yes, sir. You have any question on this? Thank you, sir, for presenting such a great presentation. And yes, I got to know a lot of about the microplastic, how it is harmful and everything. And till the end of the presentation, everything for me, all the questions was solved. So from my side, there are no questions, but I would request the other attendees that if there are any questions regarding this presentation, they can ask. They can unmute themselves and then ask to Yes. to sir. Right. Mr. Muni, I think he cannot hear us. So Okay. I think we can conclude the session. You please say the word of thanks, please. Yeah, sure, sir. So with this, we would like to conclude it. So on behalf of everyone, I extend my heartfelt gratitude to Dr. Swaranjit Singh for gracing us with the presence, with his presence today, and for sharing the extent of harmfulness of microplastic and the knowledge about
about what are microplastic, types of microplastics, how they are harmful for plants, animals, and human, and what kind of problems they can cause in human bodies, and how we can avoid such plastics in our day-to-day life. So, with all these knowledge, we would like to end this whole seminar, and I would also like to express my sincere appreciation to all attendees for their active participation and engagement throughout the event. As we move forward, let's carry our knowledge about plastic and um, inspire the next generations or the people around us about the microplastic and the threats which they are causing. So, with this, we come around the end of the seminar. But before ending, I would like to ask Dr. Swaranjit Singh if he would like to give some ending statement or anything. Otherwise, we will end it right now. I would only like to thank you, Dipshika, because you conducted the event very, very well. And you Thank you very much, sir. projected the PPTs so well, and I didn't have to tell you twice. So that is the best part. Now, I would like to ask Mr. Muni, you have any comment? You unmute your mic. Unmute. I learned a lot of new things, which is scary. But thank you for highlighting that. And it calls for all the more a greater precaution on our habits and learn to see the environment with a little macro lens and micro lens. Right. Thank you, sir. Thank you very much. You know, it's already there in the planet. We are full of microplastic. Trillions of tons are in the sea. We have done a mess of plastic. And now we should do one thing. The government should tell all the people, government of US, government of India, government of China, not to use plastic products as far as possible. Because whatever we have on the planet will take thousands of years to degrade. It will not degrade so easily. So we should stop using plastics in the coming days. That is the message I want to give. Otherwise, our children will suffer more than what we are suffering. Very true. That is very the message. True. Very true. Yes. Thank you. Thank you, sir. Muni, sir. Thank you. Thank you, Dipshika. Thank you. Thank you. Bye. Thank you, sir. Thank you. Thank you. So with this, we would like to end this seminar about microplastic. And thank you for joining. Thank you so much.